Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Hope you are fine by the grace of Allah Almighty. My dear students, my today's video is about mispronounced words in English. In this video, I am going to show you how to pronounce difficult English words. And if you are a learner of English language, then pronunciation is probably one of the biggest frustration you have right now. Watch the video till the end, and I am 100% sure after a little bit effort and practice, you will pronounce these words a lot better than before. Let's get started. माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है ऐसे लफ्ज़ों के बारे में, इंग्लिश के ऐसे अल्फाज के बारे में है जो हम जो है से मिसप्रोनाउंस करते हैं और उसकी प्रोनाउंसिएशन हम सही नहीं करते. वी कैनॉट कवर ऑल द वर्ड्स इन अ सिंगल वीडियो. हम इसमें सिंगल वीडियो में तो वो कवर नहीं कर सकते, तो दिस इज़ द पार्ट 1. इसके बाद जो है अगले आने वाली वीडियोस में मोस्ट ज़्यादा लफ्ज़ भी कवर मैं करूँगा. सो इसमें 10 से 12 लफ्ज़ जो ऐसे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि उन्हें प्रोनाउंस कैसे करना है. तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं, जहां आपको ये मैं वर्ड्स पहले लिख कर फिर उनके बारे में थोड़ी बहुत उनकी प्रोनाउंसिएशन और उनका उनका मीनिंग क्या है वो भी बताने की कोशिश करूँगा. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें. थैंक यू. So this is the part 1 of my video, mispronounced words. The very first word you are looking at the screen, this is the way in which a word or a language is spoken. And look at the pronunciation. Word itself is called pronunciation. So the proper way to pronounce this word is pronunciation. 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 So move to the next one. What do you have first thing in the morning? And this is very commonly mispronounced word. How do we go about this one? ये ऐसा लफ्ज़ है जिसको हम बहुत ज़्यादा मिसप्रोनाउंस करते हैं. एक्चुअली इसमें दो पार्ट हैं. जैसे द फर्स्ट पार्ट है ब्रेक एंड दूसरा फास्ट. और हम इसे समझते हैं कि एक जो है वो ब्रेक, एक फास्ट. अगर हम इसे इकट्ठा बोलें तो ब्रेक फास्ट बनेगा. बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू प्रोनाउंस दिस वर्ड. The correct pronunciation of this word is breakfast. 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 At number 3, if we talk about a piece of fabric, just a piece of fabric, then this word comes into our minds. So how would we pronounce this word? जब हम एक कपड़े के किसी पीस की बात करते हैं जो सिला हुआ नहीं होता, तो हमारे ज़हन में सबसे पहले ये लफ्ज़ आता है. बट कैसे इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इंग्लिश में से कैसे प्रोनाउंस करेंगे? Look at, I have separated the sound of this word. K, L, A, W, and T, H. Cloth. 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 And here as the similar word. And when we talk about a different piece of thing that we wear on a daily basis, कैसे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, ये लफ्ज़ कैसे बोला जाएगा? Look at the sound I have separated. K, L, O, W, T, H, S. So we will pronounce this word clothes. Clothes. Clothes.
And at number 5, there is a word always mispronounced by most of the people. This is a disease where you are not able to breathe properly. What is that called? Asthma? No, no. This is not the correct way to pronounce this word. So how would we pronounce this word? Asthma, 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 asthma. So again, repeat after me, and after some practice, you will be able to pronounce this word correctly. Not asthma, 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 asthma. The next one, again, the very commonly mispronounced word. This is all about transport. A thing used for transporting people or goods, especially on land, such as car, lorry, or cart. But most of the people pronounce this word wrongly. Vehicle, vehicle. This is not the correct way to pronounce this word. What is the correct pronunciation? Look at the slide. Vehicle, 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 not vehicle. The correct way of pronunciation to pronounce this word is vehicle, vehicle. So another common word, we mispronounce this word as well. A voucher entitling the holder to discount of a particular product. किसी भी मखसूस प्रोडक्ट के लिए हमें जब किसी को डिस्काउंट मिलता है तो ऑलमोस्ट हम सब इसे कोपन कहते हैं, कोपन। बट ये सही इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, तो सही प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होगा? कूप ऑन, कूपन, 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 कूपन। नंबर 8 पे है, बहुत से लोग इसे पढ़ते हैं ज्वेलरी, ज्वेलरी। तो ये इसको प्रोनाउंस करने का इंग्लिश में ये सही तरीका नहीं है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? लुक एट द साउंड, jewelry, 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 jewelry. So at number 9, what do you mean by this word? Rubbish or waste, especially domestic refuse. ये वो चीज़ें हैं जो गंद, कूड़ा करकट में आती है, घर की भी जो वेस्टेज हम बाहर फेंकते हैं, और हम में से बहुत ज़्यादा लोग इसे गार्बेज कहते हैं, गार्बेज। और इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? लुक एट द वर्ड, garbage, 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 garbage. etc, actor, etc. This is the very common word. This is commonly used at the end of a list to indicate that further similar items are included, or at the end of the paragraph, this is included, etc.
and most of us read it, most of us pronounce it, etc. But this is not etc. This is called etc. 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 और यहाँ आपको इसकी फुल फॉर्म भी मैंने लिख दी है. Hopefully you will enjoy that. It's mean end of thinking capacity. End of thinking capacity. So this is another commonly mispronounced word. So what is this? This is an idea or plan put forward for consideration. ये suggestion है लफ्ज, लेकिन हम mostly इसको पढ़ते हैं suggestion. But the correct way to pronounce this word is suggestion. 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 And at number 12, ये मोस्टली हम घर में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं. ये चीज़ें मुख्तलिफ फॉर्म में ये होती हैं और इसको भी हम मिसप्रोनाउंस करते हैं. तो क्या प्रोनाउंसिएशन इसकी होगी जी? वेजिटेबल? नो नो, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. वेजिटेबल. Vegetable. 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 So this is the end of this video. I hope you really liked this video, and if you did, please drop a comment. Thanks a lot for watching. We will meet in next video in future, inshallah.